So hello everyone. Today we will start with another sectional test of English. So let's begin. First question. Select the option that can be used as one word substitute to free from restraint. Okay, escalate, validate, emancipate और subjugate. ठीक है ये होगा. Financial hardships ruined my plans for a master at Cambridge. But this inspired me to help the poor and talented students to cracking the competitive exams. Okay, next question. 4 words are given, out of which 3 are spelled correctly. Incorrect. Unforeseen, vicious, stilettos, bewilders. Okay. ठीक है, next question. Jubilant का antonym static. Next question. A strong dislike between two persons. Okay, rivalry. Next question. The world knows Raghuram Rajan as one of the best economists of the world. Raghuram Rajan is known to the world as one of the best economists of the world. Okay, ये लगाते हैं. Raghuram Rajan was known by the world. Rajan was known to the world. ठीक है ये वाला. Next question. I have read 20 pages today. I will read the rest of 30 pages tomorrow. Okay, ये लगाते हैं. Next question. She forgotten her keys as she was in a hurry. ठीक है ये लगाते हैं. Next question. Loyalty to caste and community is given priority over devotion for the motherland. Over devotion to the motherland. Okay, so next question is rotten का synonym. Stay. Next question. Very often reporters have incurred the wrath of powerful people and has had to pay for it. Okay, next question. Chittagong Armory in the Bengal Presidency of British India. The Chittagong Armory raid police raid was an attempt to raid the armory of Presidency of British India. Police and auxiliary forces from the Chittagong Armory in Bengal. Okay, next question. Tom raised these vegetables by the sweat of his bro. So idiom है by the sweat of one's brows, by one's hard work or efforts. Next, it is a fine morning, isn't it? Next, इसमें idiom बताना है a house of cards. The organization that looked so solid and dependable turned out to be a house of cards. An organization or a path that is very strong and cannot be easily destroyed. ये वाला हो सकता है. Organization made from the money earned through gambling. या फिर ये हो सकता है. Next question. नहीं. Okay, तो इसका हम ये लगाते हैं. Very weak and can be easily destroyed. Next question. Assumption का best meaning क्या होगा? Fiction, gospel, restitution, surmise. ठीक है, fiction लगा दें. Next,
An area devoid by forest will go barren and turn out to be desert in the course of time. An area devoid by forest. An area devoid of forest will go barren. Next, advent. Advent का एंटोनिम. Next, departure. Next question. He likes being alone in the house. Next question. Abhishek sleeps with the windows open unless it's very cold. Many ancient civilizations had complex writing systems that and linguists are still working to decipher. The written system of Mayan language, for instance, appeared a mystery to scholars, remained a mystery to scholars until the 20th century. The Maya were one of the most powerful pre-Columbian civilizations in North uh, Maya were civilizations in North America uh, and their Central American temples and manuscripts and 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 their central were inscribed with a collection of square glyphs of symbols. Um, pre-Columbian pre-Columbian there in North America with and their Central American temples and manuscripts are inscribed with a collection of square glyphs. Okay, save. 24th का था fourth and their Central American temples. Okay, third वाला था and manuscripts are inscribed on a collection with inscribed with. ठीक है, next ये देखते हैं. आया 32 solutions. Okay, so the first question गलत था. इसका one word substitute बताना था. Subjugate to free from restraint का substitute to free from restraint. Emancipate. ठीक है. To give emancipate means to give somebody the same legal, social or political rights as other people. Subjugate means to defeat somebody. Escalate means to become stronger or more serious. Okay, so the third question. इसमें unforeseen correct है. Stilettos be wilder ये होगा. Okay, vicious का गलत है. Vicious का जो स्पेलिंग होता है करेक्ट वो होता है VISCOUS. VISCOUS CI नहीं होता. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. जुबिलेंट का एंटोनिम होता है ओके डेस्पोंडेंट. एंटोनिम लाइक जुबिलेंट होता है एक्सट्रीमली हैप्पी या फिर एक्सपेशली बिकॉज ऑफ सक्सेस तो जुबिलेंट. लेकिन डेस्पोंडेंट का मतलब होता है विदाउट होप, एक्सपेक्टिंग नो इम्प्रूवमेंट. इन्फ्लेटेड होता है refers to something that is expanded or exaggerated. Like ये related नहीं है emotion से. Static, not moving. Thrilled means like feeling or showing a great excitement and pleasure, very excited. But jubilant होता है जो बहुत happy है क्योंकि सक्सेस मिली है. लेकिन despondent वो होता है जिसके पास कोई होप नहीं है या फिर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कोई नो इम्प्रूवमेंट. तो इसलिए इसका सही होगा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स. ये होना चाहिए क्या? हाँ. एंटीपैथी होगा कि राइवलरी तो होता है कंपटीशन फॉर द सेम ऑब्जेक्टिव और द सुपीरियरिटी इन द सेम फील्ड. लेकिन एंटीपैथी होता है डीप सीटेड फीलिंग ऑफ एवर्जन. लाइक फीलिंग है लेकिन आप दिखा नहीं रहे. एंटीपैथी. टॉलरेंस तो ये है कि एबिलिटी और विलिंगनेस टू टॉलरेट करना. और एडोरेशन होता है डीप लव एंड रिस्पेक्ट. बट इसका होगा स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है बिटवीन टू पर्सन तो वो होता है एंटीपैथी. ठीक है. 6th क्वेश्चन का है द वर्ल्ड नोज रघुराम राजन एज वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो रघुराम राजन is known by the world as one of the best economists is known to the world. to आएगा लेकिन is भी आएगा. ठीक है. तो अब सेंटेंस एक्टिव में है हमें पैसिव में चेंज करना है. सो known will be used with the preposition to. जैसे I know you तो you are known to me होता है. ऐसे ही known के साथ to आना चाहिए. ठीक है. उसके बाद इसमें लिखा है कि annoyed, examined, cramped, decorated वो सब प्रपोजिशन विद के साथ यूज होता है. जैसे हिज परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटेड मी तो आई वाज डिसअपॉइंटेड विद हिज परफॉर्मेंस. ठीक है. और कंटेंट, एम्बडीड, एंगल्फ, इंटरेस्टेड तब इन आएगा दैट
This box contained 20 pencils, so 20 pencils were contained in the box. ऐसे ही the world knows Raghuram Rajan. Raghuram Rajan is known to the world as one of the best economists of the world. ठीक है. Okay, so 6th के बाद हम 11th देखते हैं. Very often, reporters have anchored the rich and powerful people and have had to pay for it. Assumption का हमें मीनिंग या सिनोनिम बताना था. तो assumption means some surmise. ठीक है. तो assumption is a noun. It means a thing that is accepted as true or as certain to happen without proof. तो surmise means supposition that something is true without having evidence to confirm it. ठीक है. फिक्शन होता है समथिंग दैट इज इन्वेंटेड और अनट्रू, जो बिल्कुल ट्रू नहीं है. गॉस्पेल होता है इट ओरिजिनली रेफर्स टू द टीचिंग और रेवलेशन ऑफ क्राइस्ट, बट इन अ फिगरेटिव डिनोटेशन इट ऑल्सो रेफर्स टू समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, जो बिल्कुल सच है उसमें यूज होता है गॉस्पेल. फिक्शन अनट्रू के लिए. रेस्टिट्यूशन द रिस्टोरेशन ऑफ समथिंग लॉस्ट और स्टोलन टू इट्स प्रॉपर ओनर. ठीक है. और कंपेंसेशन फॉर इंजरी और लॉस. ठीक है. रेस्टिट्यूशन तो इसका होगा एजम्पशन का सरमाइज, लाइक जो चीज़ हमने एक्सेप्ट कर लिया ट्रू है बट प्रूफ नहीं है हमारे पास, बस वही होता है सरमाइज का मतलब. एग्जाम्पल द पुलिस सरमाइज दैट द रॉबर्स हैव फ्लेड द कंट्री टर्न्ड आउट टू बी राइट. 16th. तो इतने ही इनकरेक्ट थे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल.